discussing about a lease cancellation agreement and how can we draft a lease cancellation agreement template. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट होता क्या है. सो अ लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट a current lease before the end date specified in the contract. Now, this means that एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट के बीच में जो रेंट अग्रीमेंट बना है उसे कैंसिल या टर्मिनेट करना उस डेट से पहले जो भी अग्रीमेंट में लिखा हो. Now, this paperwork or this document can be used by either the tenant or the landlord to cancel the lease. And this document will allow any party to submit their case for an early termination of the lease while still safeguarding their legal rights under the original lease agreement. अगर आप समय आने से पहले ही अपना रेंट अग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहते हो बिना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के, तो एक अच्छा लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट आपके पैसे और टाइम बहुत कुछ बचा सकता है. तो अब हमें जान लिया है कि लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट क्या होता है. नाउ वी विल मूव ऑन टू हाउ द डॉक्यूमेंट ऑफ लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट शुड बी ड्राफ्टेड. कम से कम ये 4 पॉइंट्स आपके लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट में होने ही चाहिए. सो फर्स्टली, द रेंटर, the landlord and the property must all be mentioned in this document. Secondly, the landlord's and the tenant's contact information as well as the rental property's address should be included. Thirdly, the present lease terms as well as the new lease termination date should be mentioned. And fourthly, any penalties for early cancellation should be included in this agreement and both the parties should agree to them before signing the deed. So now we will cover the aspect of why a lease agreement template should be made. अब हम समझेंगे कि एक लैंडलॉर्ड और एक टेनेंट के बीच में रेंट अग्रीमेंट को पहले ही टर्मिनेट करने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं. नाउ इफ द लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप इज एंडिंग, सम रेंटल अग्रीमेंट्स रिक्वायर नोटिस टू बी इशूड. अब इस सिचुएशन में अगर आपको अपनी रेंटल लीज जल्दी कैंसिल करनी है तो एक लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट को ड्राफ्ट करके यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका रेंट अग्रीमेंट पूरे साल के लिए बनाया गया है देन वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल. तो अगर आपको कैंसिल करना है तो you should send a lease cancellation agreement within a period of at least 2 months. So this way the landlord has more time to find a tenant and the tenant also has more time to find a new place to live in. Before ending a periodic or month-to-month rental, certain jurisdictions require a minimum number of days notice to the tenant. टू केसेस में आपको एक एविक्शन नोटिस फॉर पीरियोडिक टेनेंसीज प्रिपेयर करना होगा जिसके अंदर बेसिक नोटिस रिक्वायरमेंट्स और कैंसिलेशन डिटेल्स होंगी. तो अब हम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से एक लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट बन सकता है और सिर्फ यही रीजंस लीगली यानी कोर्ट में वैलिड होंगे अगर कोर्ट तक बात पहुंचती है. तो it is also important to tell that in our previous video we talked about the eviction notice or deed from the perspective of a landlord or an NRI landlord. तो अब हम इस वीडियो में टेनेंट के पर्सपेक्टिव से उन सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करेंगे जिसमें लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट बन सकता है.
So basically, a renter is usually required to follow the conditions of a lease until it expires. However, there are mainly two exceptions. जैसे कि first is legally permissible under federal or state law. Now, this means that while state laws differ, federal law allows a tenant to terminate a tenancy early if he or she enlists in activity military services. In some areas, a renter can legally break a lease if they are moving to an aged home care or because their current employer is relocating. तो अगर कोई tenant को suddenly मिलिट्री सर्विसेज ज्वाइन करनी है या उसकी एम्प्लॉयमेंट रिलोकेट हुई है या फिर कुछ ऐसे टेनेंट्स हैं जिनको अगेन किसी और होम केयर की ज़रूरत है, तो इंडियन लॉ अलाउज दोज टेनेंट्स टू टर्मिनेट देयर रेंट अग्रीमेंट बिफोर द एंड डेट of that rent agreement. Also, in many places, a landlord's breach of health and safety laws that results in unacceptable living conditions for a tenant is referred to as a constructive eviction, which can also happen. Now, our second point focuses on significant damage to the rental unit, which prevents occupancy. Now, in this, when a natural disaster or any other situation for which the tenant bears no responsibility or destroys or significantly damages the rental property, the renter may move out before the contract expires. तो नेचुरल डिजास्टर्स ने अगर प्रॉपर्टी पे इनफ या और सिग्निफिकेंट डैमेज कर दिया है दैट इट्स ऑलमोस्ट अनबेरेबल टू लिव इन दैट सिचुएशन इन दैट प्रॉपर्टी, तो उस केस में टेनेंट एक लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट ड्राफ्ट कर सकते हैं. But under this point, it should be noted that the landlord can sue a tenant for damages if he or she violates a lease without a legally permitted reason. The landlord, on the other hand, must try to re rent the unit to offset the damage, and if the landlord suffers losses in excess of the security deposit, then the landlord may sue the tenant for the period the unit was vacant, and the cost of finding a new renter and attorney fees if the lease agreement allows for it. So now we will move on to our next subtopic, which will tell us about the ways in which a rent agreement is actually terminated or cancelled. अब इसके अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट को जानने चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So there are mainly two ways to terminate a lease and relieve both parties of their responsibilities. The first is in which the NRI landlord or Indian landlord or a tenant may unilaterally issue a notice of lease termination to the other party if just one side desires to stop the agreement. मतलब कोई एक पार्टी लैंडलॉर्ड या टेनेंट जिसके भी रीजंस लॉफुली एक्सेप्टेबल हो, वो एक लीज कैंसिलेशन अग्रीमेंट टेम्पलेट दूसरी पार्टी को इशू कर सकती है. And second is the NRI landlord and tenant may execute a mutually agreed upon lease termination agreement if both parties agree. Now इसके अंदर दोनों landlord और tenant mutually decide करेंगे for early termination, तो एक बन सकता है cancellation date. Now, the termination clause is quite crucial because both the tenant and the owner are legally obligated by the clause's provision. So, if your rental agreement specifies a 2-month notice period for termination, then the tenant or the owner must notify the other 2 months in advance of the termination. And if the tenant is unable to wait until the notice time expires, he will be required to pay rent for the notice period even if he does not remain in the rented home. So miscommunication को avoid करने के लिए एक written notification भी
convey honi chahiye, or which is formally known as a lease agreement cancellation template. Now, there are likely no hazards if both parties, the owner and the tenant, have no objections to the arrangement being terminated. And the tenant is obligated to pay if the owner wants a few months' rent and any other costs that are in compliance with the agreement. Now, if we finally move on to our last subtopic for the video, it will inform us about how can anyone, especially an NRI, draft a lease cancellation agreement template. So, 8 basic elements should be present in a simple lease cancellation agreement template. First, landlord's name and other details. Second, tenant's name and other details. Third is original rent agreement. This includes name, beginning and end dates of the rent agreement. Fourth is vacate date. Now, this date is the date on which the tenant will vacate the premises and leave the property. Fifth is the reason for termination or cancellation. Sixth is the penalties and fees that you are aware of, as well as how you plan to pay them. Seventh is forwarding address. Now, this is the address to which future notices or security deposits should be sent. And lastly, eighth is the other difficulties. For example, if you have a power or cable service in your name, so you should specify when these services will be stopped. Thank you.